Electrified. Hello and welcome to another Rep Sports episode covering the IPL. It's a pleasure to have my favorite panelist, Abhijit Deshmukh, who is obviously at the stadium and he tells us the atmosphere is electric. Rima ji, welcome. You are in CSK colors. And of course, as Always, always, joining always, Mukherjee. always, always. Always, Whenever CSK absolutely. play, whenever CSK plays, whether Dhoni is in yellow or not, Rima ji is in yellow. Absolutely. Rima ji, I think on mute. या सॉरी मैंने कहा मैं ट्रू फैन हूँ देवाशीष की तरह नहीं हूँ हाफ मैच में गुजरात टाइटंस की जर्सी द मोमेंट बैटिंग फ्लॉप हुई इमीडिएटली कैजुअल में आज मैं भी येलो में Yesterday, हूँ. but हाँ yesterday, अभिजीत आप तो मेरे फेवरेट बन चुके हो डांस वीडियो के बाद yesterday, Devashish was in Gujarat. Halfway through, he changed his T-shirt even before the game finished. Fan होता है ऐसा. सी और उससे एक दिन पहले प्रांतिक वो केकेआर के फैन थे अगले दिन वो बन गए फटाक से गुजरात टाइटंस के फैंस द मोमेंट गुजरात टाइटंस की बैटिंग फ्लॉप हुई वो वापस आ गए दूसरी तरफ IP, I, ये आईपीएल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है and I'm going to start with actually Abhijit, I want to take on two things, right? For those of you who may not have seen, Abhijit is a fabulous dancer. So I'm going to start with a personal question that Thank Abhijit, you. आपने ये आप डांस Prantik, sorry, I think your voice is breaking. स्टक हो गया Yeah, back again. You can talk now. You might want to take over. I think he's stuck. चलो ठीक है अभिजीत से स्टार्ट करते हैं अभिजीत मुंबई के लिए आप डांस कर चुके हैं एक बार डांस की आपके पास कैपेबिलिटी डेफिनेटली है बट आज सीएसके में एक चेंज हुआ है टॉस जीता है पहले बैटिंग पहले वो बॉलिंग कर रहे हैं धोनी ने और एक चेंज जो है मोइन अली वापस आए हैं ये टीम दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर नजर आ रही है Right. देखिए, all it takes is one match. If you remember, सनराइजर्स हैदराबाद पहले शायद 3 या 4 मैचेस हार गए थे. देन उन्होंने जब पहला मैच जीता तो उसके बाद कंसेक्यूटिवली 5 मैचेस जीते. तो नाउ इवन सीएसके के लिए अभी भी प्लेऑफ का रास्ता इतना इजी नहीं है. बट धोनी एक महान खिलाड़ी क्यों है? क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं. तो उनको पता है अभी कि बचे हुए जो मैच है उनमें हमें बस अच्छा खेलना है. आई एम श्योर वो बस मैच टू मैच थिंक करेंगे. एंड देन ऐसा नहीं है कि उनके लिए भी खत्म हो गए. हाँ, अगर आज वो मैच हार जाते तो शायद उनके लिए आईपीएल खत्म हो जाएगा. बट गिविंग द बेस्ट शॉट. एंड आई थिंक जब मैं लास्ट मैच था आरसीबी और सीएसके का, जब मैं डीवाई पटेल में होता तो मैं देख रहा था वो आरसीबी के अगेंस्ट समहाउ चेन्नई और they get very very enthused stronger. And what a match was that. Robin Tappa and Shivam Dubey played a brilliant knock. I think वही शायद आज भी देखने को मिल सकता है. And both the teams काफी important match है. I mean every match for CSK is now do or die. But for RCB also it's a very important. Prantik is here now you can can you take over am I audible? yes All right, yeah. So Abhijit, I wanted to first get your thoughts on the electrifying atmosphere. कैसा लग रहा है? Obviously, Thala is back. We saw the magic he had, the impact he had on CSK. What's the atmosphere like today? मैं वीडियो भेज रहा हूँ, भेजा मैंने, अभी वो प्ले हो जाएंगे कुछ टाइम में. बट आई टेल यू इट्स वेरी रेयर कि आप चेन्नई और आरसीबी का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे देखते हो. आई वुड से मैं थोड़ा लकी हूँ. इस बार दोनों मैचेस महाराष्ट्र में हो रहे हैं. एक डीवाई पाटिल में हुआ था, एक पुणे में हुआ. लेकिन मैं बताऊंगा कि पुणे इज मोर हार्डकोर. काफी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा है. आज जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, देखिए हाफ आरसीबी फैंस है और हाफ सीएसके फैंस है. और इलेक्ट्रिफाइंग एटमोस्फियर है. धोनी इज बैक एज अ कैप्टन. एंड देखिए दो स्टार, बड़े स्टार धोनी और कोहली आपको एक मैच में देखने को मिल रहा है. हु विल लूज द अपॉर्चुनिटीज. मैं यहाँ पे आज काफी जल्दी आया था, 4 बजे काफी लोग आ चुके थे. जब तक वो बस आती है ना, आप उसमें देख सकते हैं इतने लोग क्रेजी है कि वो बस में, हालांकि कुछ के शील्ड लगे होते हैं, वो प्लेयर्स को नहीं देख पाते, लेकिन उस छोटे से मोमेंट को भी वो वो विटनेस करना चाहते हैं कि हमने कोहली और धोनी को इतने क्लोज से देखा है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज एल क्लासिको 5 के.
या एल क्लासिको वेल सेड। रीमा जी आपके लिए सवाल, आपने इतना क्रिकेट खेला है, वी सॉ दैट जैसे ही धोनी आए, सीएसके का रतबा बदल गया, ऋतुराज scores and they had a fantastic win. But will it be fair to say, I mean, and I want to keep it an open question, is it necessarily, do you think it was the impact of Dhoni? Yeah, the team just happened to play well on that day. आपके हिसाब से धोनी coming back as captain, what are the pros and cons of that move? देखिए दोनों ही मैं कहूँगी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उनका लक फैक्टर क्योंकि धोनी के साथ वो लक आता है, वो हम सब जानते हैं। और दूसरा बैटिंग मैं नहीं कहूँगी, देखिए उस दिन ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, तो उसमें कैप्टेंसी का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन कैप्टेंसी का रोल फील्डिंग में ज़रूर आया था। जिस तरह से उन्होंने मैनूवर किए अपने बॉलर्स को, रिसोर्सेज़ को यूज़ किया, कौन-सा बॉलर कब बॉल डालेगा, इमीडिएट चेंजेस करते नज़र आ रहे थे, प्रोएक्टिवनेस दिखी। वहाँ पे धोनी मुझे लगता है वो एक्स फैक्टर थे और वो उस दिन डेफिनिटली बदलाव नज़र आया और उस दिन जडेजा ने 3 ओवर में शायद 13 रन दिए थे शायद या 4 ओवर में 15 रन ऐसा कुछ उनका स्पेल था। सो वो भी थोड़ा-सा रिलीफ नज़र आया। सो आपको जडेजा चाहिए परफॉर्मर। जडेजा एज़ अ कैप्टन अगर नहीं आते फेयर इनफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 डायमेंशनल प्लेयर है, अगर एक कैप्टेंसी हटा के वो आपको 3 डिपार्टमेंट में परफॉर्म करके दे रहे हैं तो आप एनी डे लेंगे। और उस दिन एक अलग ही एनर्जी नज़र आई थी सीएसके की। सो ये इफेक्ट धोनी अपने आप लेके आता है क्योंकि कहीं न कहीं ना वो ओपोनेंट के माइंड में भी खेलते हैं कि अब धोनी क्या करेंगे? नेक्स्ट मूव क्या होगा? सो वो मैंने कई बार हमारे क्रिकेट में भी देखा है, वुमेन्स क्रिकेट में भी और वहाँ पे धोनी पे भी आता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब फॉर्च्यून चेंज हुए हैं सीएसके के लिए और अब मोमेंटम मिला है। अच्छी बात होगी कि अगर छोड़े ना और इसी तरह से खेले, बैटर्स फॉर्म में आए हैं, बॉलिंग अच्छी नज़र आई, उनको रिसोर्सेज़ अच्छे से यूज़ किए, तो एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस। नहीं, सही सही बात कहा। So, and Joydeep, your thoughts of this. I mean, obviously it's a given that Dhoni is a better captain than Jadeja, but I want your thoughts on two things. Was this is an unprecedented, but was this a good move by CSK mid-season? What does it do to Jadeja the player? Does he feel free, or does he also sort of feel a bit embarrassed कि मैं ये कर नहीं पाया? No, I don't think he feels embarrassed because he hasn't captained in a long time. He hasn't captained since under 19 Saurashtra, which was in 2007. So I don't think, the only time you feel embarrassed is when you have a reputation to protect. And he has no reputation to protect as a captain. It's a known territory for him. It was difficult times. They've not been able to get a proper team in the auction. So it was a very difficult time that the captaincy was given to him. Let's just get that straight once and for all. He did not Right. captain the strongest CSK team, number one. Number two, the fact that, I think somewhere along the line, even Dhoni could have gone and said, "यार, अगर तेरे लिए बहुत कुछ हो रहा है तो बताना," because this is Dhoni's team. Dhoni is not the captain; he is हुँ। everything for this team. So he वो जाके यार जड्डू अगर तेरे को लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है बताना हम कुछ करते हैं इसका. He won't Right. say, "I won't take over the captaincy." He'll say, "We'll work something out because I'm the boss of the team and I'll make sure everybody's happy and we need to perform with bat and ball." If that's not happening because of the captaincy, then we will look into it. If that's not happening otherwise, we will carry on as captain. So Jadeja might have felt this too much because captain in an IPL team is not easy. There's pre-match, post-match, ये वो इसमें जाओ उसमें जाओ इससे बात करो उससे बात करो. It's just not captaining. In India, it's easier to captain because you play with those 11, 14 people 9 months a year. There are one or two newcomers. Here, there's a new team that's come. This time, even more so with the auction, everybody knew. And you come in, then suddenly you got about 20 guys, out of which 12 are no new. So it's not easy for you to have everybody gel together. So that's been the challenge, and that's where I think Chennai for the first time ever in the auction they came out second best. No, very well. I love your perspective. It's only when you have a reputation as a captain to protect, and And it's maybe just like to okay add, and good to be honest and do what's in the best interest of the team. Yes, Abhijit, please weigh in. just like to add, I think Jadita made a very good point. I think Dhoni is more than a captain; he's a leader. I think that's what leader do. He understood, like, if the team is in trouble. I'm sure this must have happened, like, like Joyda said, he must have gone to Jaddu and asked, like, what's going on, are you know, so that's the leadership quality. I think that's what he's all about. Even if he's not a captain, he's a leader. So that makes all change. And with the experience he has, with the mindset he has, I won't be surprised CSK goes on to win every match from here. That's a huge vote of confidence, Abhijit and Rima ji. I'm going to come to you on that particular point. एक तरफ
RCB has gone winless for 14 days, despite Kohli sort of scoring, Patidar scoring, bowling department where they have good talent. Of course, some worries with Duplessis, Karthik, etc. You know, I guess I want your perspective on the RCB side. What has suddenly gone wrong in the last, one fortnight, last 20 odd days? Ki teen match हार चुके हैं. Despite some decent performances, despite a pretty decent squad, what has suddenly gone wrong for RCB here? प्रांतिक आरसीबी का हमेशा से प्रॉब्लम एक ही रहा है कि वो एक दिन पे एक डिपार्टमेंट चलता है। जब 200 रन बनाते हैं तो बॉलिंग फेल हो गई, जब रन्स कम बनाते हैं तो बॉलिंग अच्छी होती है, कभी बैटिंग फेल हो जाती है। सो एज़ अ यूनिट क्लिक होना पड़ेगा, तीनों डिपार्टमेंट में इकट्ठे क्लिक होना पड़ेगा, एक अच्छा दिन देखना पड़ेगा। वो कहीं न कहीं मिस करते हैं, कभी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, कभी बॉलिंग में रन्स ज़्यादा लीक हो रहे हैं। लेकिन लास्ट मैच में पॉजिटिव काफ़ी थे। विराट कोहली के भले से रन आए, पाटीदार ने बहुत अच्छा इनिंग खेला, महिपाल टीम में वापस आए, उन्होंने फिनिश अच्छा किया। सो अब ये टीम मोर बैलेंस लग रही है और अच्छी बात ये है कि आज अनचेंज्ड साइड है, यानी कि सब फिट हैं, कार्तिक फिट है और जब आपकी साइड आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करते ना, यानी कि आप थोड़ा-सा सेटल सॉर्टेड होने शुरू हो जाते हैं। सो ये मैच तो अच्छा होने वाला है लेकिन विराट कोहली से हम थोड़ा-सा और रन्स देखना चाहेंगे। कॉन्फिडेंस आ चुका है, फैफ के बैट से अगर रन्स आते हैं तो बड़ा स्कोर हम देख सकते हैं। लेकिन अब थोड़ी सॉर्टेड आरसीबी नज़र आ रही है और सीएसके की बॉलिंग थोड़ा-सा वीकर लिंक है उनका। सो यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं जो भी आरसीबी के बैटर्स हैं कि आज मौका है उनके पास अपनी फॉर्म वापस लेके आने का और बड़ा स्कोर बनाने का। Thank you, Ji. And Joydeep, your take on the fact that from an RCB standpoint, two questions. One pointed, Rima ji ne sahi kaha ki, Kohli seems confident, but do we need to expect from Kohli, scoring at a higher strike rate? And what does Kohli need to do? And opening mein, would you experiment given that, Duplessis had, few single digit innings right now, or nothing to worry as far as you're concerned? No, I think the fact that Fab du Plessis and Glenn Maxwell have gone stone cold is one of the issues because we know when they play, their strike rate is not an issue. So when Virat gets a 50 of 45 balls, 42 balls, if Fab gets a 60 of 36 balls and Maxwell comes and gets a 42 of 18 balls, then that value of the Virat Kohli's 50 increases triple folds. The problem is that he's also taking his time because he also knows, firstly, he's not in great form. He's on his way back. And every great player has been through this. I think there's too much of attention on him. There's too much of focus. Kohli, Kohli, Kohli. I hate hearing that name in a pre-show. Just leave the guy alone. Just leave him alone. What he has done for India, very few people have done with the cricket bat in hand. So just leave him alone. And what I'm trying to say here is that all you got to do is just make sure that the others. So Virat Kohli is not in form. When he's in form, he doesn't need anybody else. We've seen that in the game. He's not in great form. The others, like Fak, like Glenn Maxwell, these are the guys they can contribute and they can help the team get better. That's where I think they can support Virat. Virat will do his job, but he might not bat at 160 strike rate now because he's still not at his best. Once he's at his best, he'll say, "Guys, take it easy. This game is on me." That isn't happening. So he'll need some help. So if the help's coming around, then he'll be fine. So we need Faf and we need All Maxwell right. fire. They've been stone cold for too long. Message is loud and clear. Leave Kohli sort of alone. Let him get back to his rhythm. But I think time for Maxwell and Duplessis, who had a good start, for time for them to sort of come to the party pretty soon because RCB definitely needs to win tonight. I mean, it's obviously both these sides. One is at 6, one is at 9. Each of these games are going to be very, very critical. Abhijit, you made a very good point about the neutral venue. Tell us a bit more about how is the Pune pitch sort of playing in the last few? What's the sort of expectation fans can have in terms of a game from today's pitch? Well, the last match played here was between Chennai and SRH. So batting first, Chennai did a superb job. I think they scored more than 200. Abhijit, can you hear us? Yep. Am I audible? Yeah. Hello? Yeah, you so are. I was saying All right, I'm not the sure if last match Abhijit can here. hear us. Rima ji, yes, sorry. Yeah, the last match here in Pune Stadium was between Chennai and SRH. So Chennai scored more than 200 runs. So it's a good track, and the match was just played like a couple of days back. So the track seems to be same. Again, we have seen in this stadium Yes. both while chasing and batting first, the team have won. So it has been mixed combination. What I feel is the team
obviously that has more potential. They can score here, and my my pick will be like if the team that bat first and put more runs here, it's difficult to chase it here. So if you score more than 180, 190, it's going to be difficult for the team that's chasing the score. 180 is a lot of runs right now, and the way the tournament is going. Any team who is batting first will say, हमको 180 दे दो, आप batting कर लो, मैं डालता हूँ. I think we lost All Karthik. right. And Rimaji, from that perspective, lot of runs. Absolutely. Lot of runs, especially I mean, we saw what happened with GT. Not easy to get there. And Rimaji, your take, agar that's the sort of analysis on the pitch, ki CSK's bowling mein. Hi, can you guys hear me? Yeah, we are breaking up Yes. on and off. Himaji, take over as always. मुझे लगता है उनका क्वेश्चन यही था कि अगर बॉलिंग अच्छी होती है सीएसके के पहले 2-3 विकेट ले लेते हैं पावर प्ले में तो फिर क्या है? जैसे हम कल जीटी में भी हमने देखा था, गुजरात टाइटंस जो थी 150-55 में रुक गई थी। तो आज मौका है एमएस धोनी के पास, अगर उनके बॉलिंग चलती है पावर प्ले में, 1-2 विकेट गिर जाता है आरसीबी का, तो फिर आप अगर 150-60 पे रोक सकते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो गेटेबल हैं, क्योंकि अब हाई स्कोरिंग है। आई डाउट कि होगा, जैसे जॉयदीप आपने बोला था, विकेट्स के मिजाज भी चेंज हो रहे हैं, थोड़ा-सा टायर्ड हो रही हैं विकेट्स, बॉल थोड़ा रुक के भी आ रहा है, जो धोनी ने भी टॉस के टाइम पे बोला, इसलिए उन्होंने पहले बॉलिंग चूज़ मोइन किया अली है। भी आ गया. मोइन अली भी आ गए, तो बहुत अब जो रोल है ना वो स्पिनर का बढ़ेगा और मुझे लगता है कि अच्छा गुड टॉस टू विन है, क्योंकि अगर पावर प्ले में मुकेश चौधरी विकेट ले लेते हैं, मोइन अली विकेट ले लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप बैकफुट में धकेल सकते हैं, क्योंकि अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरती, तो डेंजरस बैटिंग लाइनअप है। जॉयदीप आपको क्या लगता है इस बारे में? रीमा जी, ये जो चेन्नई का जो टीम है उसमें ये विकेट्स में वो ज्यादातर डेंजरस है देन द ग्रीन ones हुँ, that they had before. हुँ, If you see the batters, Robin Uthappa, Raidu, against this sort of bowling, they are हुँ, fantastic players of Spain. Moin Ali's, he can be absolutely swashbuckling with the bat, very handy with the ball, he can bowl in the power play. So I think the conditions suit CSK more today because today is, as the tournament is going on, it is, it'll be easier for CSK, the template that they're playing in, the team that they have, their strengths that they have, it's playing into. So I won't be very surprised if this team makes it. It'll be one hell of a task. It's not easy to win, हुँ, every हुँ। game and the trot, which even KKR has to do. A lot of teams have to do now. It's not easy, but it's been done before. Stranger things have happened in the cricket field. इट्स नॉट ईज़ी बट इट कैन हैपन। अभिजीत, आप मानेंगे इस बात को, एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग लाइनअप आरसीबी की बहुत अच्छी है एज़ वेल एज़ बॉलिंग भी। तो सीएसके कौन-सा क्या टोटल देखना चाहेगा, किस पे रिस्ट्रिक्ट करे जो वो चेस कर सकता हो इस विकेट पे? क्योंकि पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लिया है, तो कोई ना कोई टारगेट ज़रूर दिमाग में होगा। I think somewhere around 160. That's the what वो target करेंगे. But looking at the I think जो पावर प्ले रहेगा वो काफी इम्पोर्टेंट रहेगा. अगर पावर प्ले में कोई विकेट आरसीबी चेन्नई को अगर नहीं मिलता है, and even if they scored about 30-40 runs, I think they still have that strength कि मतलब हुँ, they can go and score big runs. I think power play will be important. If अगर जैसा अभिजीत, जोएदा बोल रहे थे कि ये जो आरसीबी के ओपनर्स है पावर प्ले में टिक गए तो हुँ। 50 के ऊपर ही होगा. अगर विकेट गिर गया दूसरा बात है. ये लोग 37 for no loss नहीं होंगे 6 ओवर के बाद. फैफ रुकने वालों में से नहीं है, अगर वो रुक गया 6 ओवर, इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ। नहीं, I जी. completely agree, but conditions different है. आज काफी important मैच है because हुँ, चेन्नई के लिए तो डू और डाई हर मैच है, और आरसीबी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है इफ दे हैव टू बी स्टे इन द हंट, कि अगर आज वो मैच हारते तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए. देन यू हैव टू कम अगेन, हर एक मैच जीतो, नेट रन रेट. सो आई थिंक एक एक मैच में संभल के खेलेंगे तो आई थिंक इट विल बी गुड. वंस यू आर ऑन द पिच, रन्स तो आ ही जाएंगे. दैट्स व्हाट शुड बी द व्हाट आई थिंक. हुँ। जॉयदीप, पहले जो सीएसके बॉलिंग कर रहे हैं, तो थोड़े बॉलर्स की बात करें। मुकेश चौधरी बहुत इम्प्रेस किया है और यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया, लेकिन वो लेफ्ट आर्म पेसर, स्विंग है उनके पास, पेस है, बाउंस है और पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज सीएसके की। Gee, he's been superb. See,
This is the beauty of the domestic cricket. जो आप और हम follow करते हैं, सब follow करते हैं. In fact, Karthik knows a lot about domestic cricket, although he lives in Singapore and half the time he's either in Cruz or in San Francisco. But he still keeps a lot of news of what's happening in domestic cricket. Abhijit, of course, is actively involved with domestic cricket. So this is the beauty. And this is where, if you're a young bowler sitting in Aligarh somewhere, and you're thinking, मैं भी ये Indian Premier League खेल सकता हूँ. हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन है. Under 16, under 19, under 25, senior, uske baad Vijay Hazare, Mushtaq Ali. You know, there's a path in front of you. And just not him, many of them, but he's been phenomenal. And kudos to BCCI for the sort of, you know, wickets we play on. You know, मैं जब शुरू किया था, I was 6 feet 2 inches tall. तो उस टाइम पे as a 17, 18 year old मैं मीडियम पेस करता था. जब मैं 6'4" बन गया और 22 हो गया और स्पिन शुरू कर दिया, दिन में 2 ओवर मिलता था मीडियम पेस. और जो घटिया स्पिन करता था उसको 20 ओवर मिलता था. ऐसे मैं भी ऑस्ट्रेलिया आता हूँ, बैटिंग के लिए खेलता था. उसके बाद मीडियम पेस डाल रहा हूँ, नेट पे 6 आदमी को डाल रहा हूँ, मैच में 2 ओवर मिल रहे. 2 ओवर का कप्तान, अब थोड़ा ब्रेक ले लो. मैंने कहा फुल ब्रेक ले लिया स्पिन तक. So because the wickets have improved, because the you know the pitches we play on, the template of first class cricket, how good is the first class cricket right now in India? You know, with the elite, the plate. So this is a byproduct of that, and kudos to them. And he's one who's made it. And there are a few. You look at Kuldeep, you look at Yash, they're coming up plenty. I would just like to see some more spinners come into the role, finger spinners. See, there will be some wrist spinners. Rimaji, you were a wrist spinner, you know they're special. But I'm talking about finger spinners. Where is the next Ashwin? Where is the next Shahbaz Nadeem? Where is the next, I don't know, Murli Karthik? You know, where are those guys? You know, those are the guys I would like to see a little more. Some spinner who comes out of somewhere and gets, you know, 14 wickets in the IPL in his first season. Like that. And Prantik, please no, go. yeah, Rimaji, thank you for covering while my network clearly Always, appears. always. Rimaji is the super Rimaji is sub. all ready. Super मेरे sub. को आदत है. एक वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में शायद, श्रीलंका में T20. वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं रिप्लेसमेंट पे गई थी, तो मैं पहुंच जाती हूँ जैसे तैसे क्या पहुंचना बात होता है. है. That's the beauty. Make the most of the opportunity. No, on this point She's of, you know, spin. Sorry, go ahead. No, she's a super sub. Super sub. She can be anchor. Super She sub. can For be sure. super sub. But Now, all and, yours. you know, Rimaji, on that note, I wanted to get your thoughts on, you know, CSK ki bowling, and you probably spoke about a few bowlers while I was away. But you know, clearly, would you think that it's going to be very much reliant on a Jadeja, on a Theeksan, on Mahesh? Like, how important is the role of spin? Joydeep was talking about the, you know, finger spin, wrist spin, etc. CSK, do you think will be very much dependent on those middle overs from these spinners? Yeah, No, just I before don't that, think so. just before that, I was trying to say that the role of the finger spinner is gone, unless you're Ashwin. You know, he's a legend. But there is no. But now the spinners are all batters. Shahbaz Ahmed, Krishnappa Gautam. They also can bat. They can go and bat at number 3. I'm talking about just a spinner, just an Ashwin without the batting. That A role can bowler be who looked can at. bat. Exactly. So, right. So, Please, Rimaji, all Rimaji, yours. yeah, you don't think it's going to be very dependent on the spinners necessarily आई winning? डोंट थिंक सो. देखिए, आपको पावर प्ले में विकेट अगर मुकेश चौधरी डाल रहे हैं और सिमरजीत जाते हैं, पिटोरियस डाल रहे हैं, तो आपको विकेट चाहिए हर बॉलर से. एज अ बॉलिंग यूनिट, है ना, बॉलिंग इन पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं बैटिंग में पार्टनरशिप की, बट एज अ कैप्टन मैंने हमेशा देखा है कि बॉलिंग इन पार्टनरशिप में ना आपको विकेट्स जल्दी मिलते हैं. अगर एक एंड से 2 या 3 ओवर आते हैं, तो बैटर दूसरे बॉलर को अननेसेसरी अटैक करने चाहेगा कि पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन है, तो वहां पे विकेट आप परचेज करते हैं. सो चाहे स्पिनर बॉल डाल रहा हो, चाहे पेसर बॉल डाल रहा हो, पार्टनरशिप में बॉलिंग करनी होगी. मुकेश चौधरी एक एंड से डालते हैं, तो अगर दूसरे एंड से मोइन अली आते हैं, तो उनको भी टाइट बॉलिंग डालना होगा. तो इंपॉर्टेंट आज सारे बॉलर्स होने वाले हैं, क्योंकि सामने की जो बैटिंग लाइनअप है ना, चाहे वो फॉर्म में ना हो, बहुत अच्छी फॉर्म में ना हो, लेकिन उनके पास ऐसे कैपेबल डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं जो अपने दिन पे ना 200 भी क्रॉस कर सकते हैं That's a great point. टोटल. सो मुझे लगता है कि Rimaji, मैक्सवेल की आप बात करें. that's a great point. All you're saying is out करो नहीं तो पिटोगे. Great point. एब्सोल्युटली. देखिए, क्योंकि Great point. यही है ना कि और शायद आप अगर वही दोनों होगा साइड से रन लीक करोगे, तो आप सिर्फ एक बॉलर पे डिपेंडेंट रहोगे, तो वो तो अगर 8th ओवर डालेगा, तो आप उस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. बॉलिंग इन पार्टनरशिप्स एज अ यूनिट क्लिक करना होगा. और सामने मैं मैक्सवेल की बात करती कि वो चाहे अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट अच्छे टच में है, सो आप उनको भी राइट ऑफ नहीं कर सकते कि आप फॉर्म में तो आ सकते हैं ना, अगर आप अच्छे टच में, जिस तरह से कोहली वापस आए हैं, रजत ने स्कोर किया है, नीचे महिपाल ने बैटिंग किया था, तो एज अ यूनिट बॉलिंग यूनिट उनको क्लिक करना पड़ेगा. That's a very good point. Ki, you know, all of these guys are probably one good innings away. They're all extremely classy players. And on Moeen Ali, I mean, Joydeep, we've spoken about him in various facets in the past.
What do you think his role is? Are you happy that he's back in the squad, or do you think CSK should have continued with the previous team that they played? Moin ka kya role hona chahiye? Because obviously, Seam can sometimes be used as a floater, batsman who can bowl, bowler who can bat. What's your take? No, on the contrary, I was a little surprised when he was dropped from the 11. This is not a very strong CSK team, and he's somebody, he's a three-dimensional player. He's phenomenal with the ball. He's very good with the bat. He can bat between 1 and 8 anywhere you want him to be, any role. He can be the finisher, he can be the opener, he can bat in the middle. And we saw when Chennai won the tournament last year, we saw the role he had. After 3 or 4 quiet games, he was not playing in the 11, which is very unlike CSK. CSK gave Rituraj Gaikwad 7 games before he scored. So, it's very unlike. And I can understand if he was being replaced by somebody who's, if they had another like for like, but they didn't. So I was a little bit surprised. They changed the combination a bit. They got the faster bowlers in. But he is a guy you would always want in your team because an all-rounder can always contribute in some form or the other. And now with the All wickets right. playing to the way they are, I think he will be more in the game now. I think he's up for a big game. I get this feeling. Hmm. Yeah, I get a feeling to that. There are, and not just Moin, I get a feeling someone like a Maxi. There are these players where at the business end, every game matters. And Abhijit, I was looking at some stats. Dhoni's has the highest number of sixes against RCB. Kohli has scored the most against, Chennai. From these two sort of legends, obviously from a fan perspective, they're all here to watch good cricket. Obviously, you said we're hoping we get to a 170, 180, if not more. What's your take as a fan? आज आप किसको देखना चाहोगे? Purely from a fan perspective, to sort of go out there and have a party and dance the way that Abhijit does. Dance on the pitch. आज कौन नाचेगा pitch पे? Well, looking to be honestly, the RCB looks stronger on the paper, but mine says CSK can win because if you see the bowling lineup, I mean it's a good for CSK, but it's not experienced. And when you have such a strong batting lineup, तो वो काफी role play करता है. But you know, high electrifying game. What I feel was a very good point by Rima ji. So I think एक तो RCB will score less than 150 or they can score much more than 190. I think that's what can happen with the CSK bowling lineup they have. Okay, so you're clearly going yellow. You're leaning towards yellow. Rima ji, आपने तो yellow पहना ही है. Signal clear है. But आपके हिसाब से what sort of a game is it going to pan out to be today? किस तरह का scoring होगा? Toss तो हो चुका है. CSK is bowling. What's your vision for the game today? प्रांतिक मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई 200-220 वाला स्कोर हार्डली देखने को मिलेगा क्योंकि विकेट्स जो हैं वो चेंज हो रही है Yeah. अनटिल अनलेस कोई मैजिकल इनिंग ना आ जाए जो पैट कमिंस की आई थी या फिर केएल राहुल ने मार थे तो मुझे ऐसा लगता है कि 160-70 का गेम तो होने वाला है मैच अच्छा होने वाला है क्योंकि आरसीबी चेन्नई के अगेंस्ट अच्छा खेलता है चेन्नई आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा खेलता है धोनी का आज 200th आईपीएल मैच है तो वो अपने आप में एक लेजेंड है और फैफ वहाँ पे पहले सीएसके के प्लेयर थे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं कि आप धोनी के साथ खेल के आए हैं वहाँ पे अब आरसीबी को लीड कर रहे हैं माइंडसेट आप जानते हैं, एक-दूसरे की गेम जानते हैं, वहाँ पे कोहली हैं जो सीएसके के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, तो इक्वली बैलेंस्ड मैच होने वाला है। मुझे लगता है कि जो बैटिंग अच्छी करेगा थोड़ा और फील्डिंग, सीएसके का जो ड्रॉबैक है लास्ट 2 मैचेस में बहुत से कैचेस ड्रॉप किए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैचेस Yeah. ड्रॉप्ड बाय सीएसके ओनली, सो वो एक फैक्टर हो सकता है, फिर भी मैं सीएसके के साथ जाऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि धोनी सब सँभाल लेंगे, लेकिन मैच अच्छा होने वाला है। Fair enough. Joydipda, are you going to side with Veda today? We are missing Veda here today. Are you going to fill in for Veda ji? I actually already did that last night, and Rima ji and Veda where I felt like they were when Amitabh Bachchan was talking to Hema Malini's mother in Sholay about how good Harminder is. That's how they were. So I felt really bad for Veda, heartbroken. She went like that towards Rima. So I'm going with Veda tonight. I'm going with RCB. Fantastic. So, Veda, if you're watching, we still have your back. And that too, Joydipda is saying that he's backing RCB. But what sort of a match are you sort of envisioning today? A 160, 170, good enough for RCB? Yeah. Difficult to say unless I've seen the pitch because, although it's on the same square, every strip is different. So it's really difficult to say. But yeah, the general template has been 160, 170. And I think both these teams have not batted at their best. If they both batted their best, we're in for a thriller. But I agree with Rimaji, bowlers might dominate this because both the teams are not really in great batting form. Just like some other teams are in great batting form. Some of the others coming through. I know Gujarat had an off day today, but that's after what? 7, 8 games, they're an off game. And they're allowed one.
But by and large, I just hope that all the batters get their eye, and then we're in for a treat this evening. All right, the message is loud and clear, I think, from our panelists that it's between team at number 6 and number 9. Kranti, Lots who of are you talent, going with? I'm going with RCB today. Something tells me RCB is going to turn the tables nice. after 3 losses. Nice. I'll side with We're Veda and 2-2 you in the today. panel. We're 2-2 2-2 in the panel. Nice. absolutely. And before काफ़ी we है, go, हम obviously, काफ़ी हैं। आप पुणे के स्टेडियम में जाएँगे ना, वहाँ येलो जर्सी ज़्यादा दिखेंगी, तो लगता है कि चेन्नई में मैच खेल रहे हो। सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल. चेन्नई को फ़र्क नहीं पड़ेगा। No, but as all of you said, I think what we're looking for is, a common theme is some of the big names. There is so much potential. Many of them may not have lived up to it, but अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है. This is it. I mean, both these Match teams is have about to to start. fight to Yes. Match is going to start. They're going to fight tooth and nail to make it there. We'll end with a fan engagement video. Enjoy the game, and we'll see you after the show, after the match. Thank you. Thank you. Enjoy. It's wonderful Wednesday here at Pune's MCA Stadium. Yes, it's that night again when Chennai Super Kings take on Royal Challengers Bangalore. Well, this is the El Clasico of IPL. The last time both these teams met were at the DY Patil Stadium, where more than 400 runs were scored. Robin Uthappa and Shivam Dubey made that day raining sixes. Will it happen tonight? RCB has lost 3 matches in a row. They're at the 6th position in the table. They need to win this game so that the route for the playoff will be easy. For Chennai Super Kings, every match is do or die. If they lose today, they're almost out of the race for playoff. With Dhoni back as a captain, it's not going to be easy for RCB. Let's see who wins tonight. See, this is the craze of the El Clasico of IPL. Chennai versus RCB. You can see this is the legacy of Kohli and Dhoni. मैम, ये धोनी ने खुद साइन किया है? जी हाँ, जयपुर में। कब हुआ था ये? 2019 में, कोविड से पहले। आप बताएंगे इस ब्यूटीफुल पेंटिंग के बारे में? एक्चुअली सर, ये पेंटिंग नहीं है, दिस इज पेपर आर्ट। ये पूरा पेपर हैंड से कट किया गया है सीजर्स से, एंड देन इट हैज बीन पेस्टेड। तो आप कैसा रहा आपका जब आप धोनी को मिले थे? बहुत ही एक्साइटिंग था। आई विश वही एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे भी लेने मिले। लास्ट मैच जीत चुके हैं, क्या लगता है अभी कैसा रहेगा? अभी तो धोनी का कैप्टनशिप है, तो चांसेस है लास्ट तक में ऑलराउंडर बैटिंग सब खेलेगा। जडेजा, धोनी, ब्रावो, इसलिए जीतने का चांसेस है। बॉलिंग भी फुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो आई गॉट दिस स्पेशल महेंद्र सिंह धोनी फैन। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अमन झाम। लेकिन क्या कारण है इतना आप धोनी से प्यार करते हो? सर, क्या कारण नहीं है, ही इज एवरीथिंग टू मी, ही इज एवरीथिंग टू मी, एवरीथिंग। माई बाई इज माई लव। The good thing for RCB is Virat Kohli is back in form. In the last match he scored 50. Well, it's going to help his momentum in today's match. It's extremely important match for RCB and people are expecting big fire from him. What is so special about this Chennai and RCB rivalry? In this way, we can be able to see the Dhoni and Kohli playing with the opponents. But what is that, I've seen that RCB भी मतलब काफी जोश में होता है, चेन्नई भी काफी जोश में होता है। जैसे कि धोनी बोले तो लीडर जो कोहली को मेंटेन कर नीचे खेलते हुए आया है। अभी कोहली जो है धोनी से सीख के आया है
अभी दोनों का ये देखना ये होता। हमारे चेन्नई और तमिलनाडु और कर्नाटक का जो है ना राइवलरी बहुत है, जैसे कि वो पानी का वगैरह। सो आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं? बेलगाम सर, बेलगाम। तो खास इस मैच के लिए देखने आए? आया सर, 300 किलोमीटर इधर से। तो ये बात बताइए कि चेन्नई के अगेंस्ट फर्स्ट मैच आरसीबी हारा था, लगता है आज रिवेंज लेगा? जीतेगा आज मैच 100%। पक्का जीतेगा। What do you think is going good in the favor of RCB this season? क्या लगता है? डीके अच्छा खेल रहा है। RCB